Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kinjal and I hope you guys are doing absolutely fine. Another vlog, another ride, another day of excitement. Woohoo! So today we are heading towards Gujarat. We are heading to Gujarat and हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने. It's a beautiful temple, beautiful place with beautiful people like you. So let's go along. So that's my bag, our guest, and that's beautiful boa. Hi. Good morning. Good morning. So yeah, we are all set to leave, and यहाँ से वो temple is around 580 kilometers, 11 hours. But हम लोग आराम आराम से फोटो खींचते खींचते, vlog करते करते हुए, and मस्ती करते करते हुए जाने वाले हैं. So yeah, all this excitement for one place worth it. So stay tuned. गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान. बाय पापा, थैंक यू. So it's 7 o'clock and we reached Ahura. The sun is about to come up and हमें actually washroom जाना था but कोई भी पेट्रोल पंप चालू नहीं था. So we took a halt at Ahura and now we are having our breakfast number 2. First breakfast हम लोग ने घर पे ही चाय and biscuit खाई थी and this is the yummiest breakfast one can have at Ahura. So here it is. So we have yummy omelette and some bun maska. अब Ahura है और bun maska नहीं खाया तो क्या ही तुमने ritual follow किया correct? And this is such beautiful and healthy way to start. Sorry, unhealthy way to start. Now we have obviously reached Gujarat and सामने ट्रेन दिख रही है. I am so obsessed with trains. Like बचपन से ही ना मुझे ट्रेन्स देखने का बहुत शौक था. And now when I am on my bike and watching trains, it is just another level of happiness. And bye train. I'll see you in a while. पता नहीं कहाँ but I'll be. Hi guys, so हम लोग गुजरात पहुँच गए हैं. We reach चिकले right now and it is around 9:30. यहाँ से हम लोग का रास्ता और 9 hours का है अप्रॉक्सीमेटली इजीली. लाइक मेरे क्रूजिंग लेवल के लिए इट इज़ 9, वैसे 8.5 hour है. सो आई 1 राइड स्लो, 2 आई व्लॉग, 3 क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट नेवर माइंड, हम लोग टाइम से ट्राई करेंगे पहुंचने का एंड वील हैव अ ब्लास्ट. सो लेट्स मूव अहेड. बाय द वे मैं यहाँ पे पेट्रोल ब्रेक ले रही हूँ. माई बी दिस बेबी वॉज हंग्री. हाईवे की वन ऑफ द रियली गुड थिंग्स इज स्मूथ रोड एंड उसके साथ साथ ये जो हमारे बाजू में फूल हार के जो पत्ते चलते आए हाय हाय, दिस इज लाइक सच ब्यूटिफुल लुक टू द हाईवे. इतना कामनेस मिलता है बट येट यू फील लाइक अ बीस्ट. बट ऑल्सो द कामनेस, आई लव इट. इट इज़ सो प्रिटी, सो कलरफुल. मतलब ऐसा बहुत हार्डली देखने मिलता है हाईवे पे एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट. सो वी रीच करजन एंड इट इज़ वेरी 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 हॉट. हम लोग का पानी ख़त्म हो गया था तो वी जस्ट टुक अ क्विक स्टॉप यहाँ पे टू रिफिल अ बॉटल एंड गेट फ्रेशन अप. सो वी वॉश द फेस ऑल्सो, से हाई टू पिम्पल. एंड ये ऐसे फ्री में ट्रैवल करते हैं, इसका भी टैक्स मिलना चाहिए हमको. इट विल बी सो मच ऑफ सेविंग्स. मतलब सेविंग नहीं, पैसे मेरे वैसे भी पेट्रोल में ही जाना है बट स्टिल या. सो नाउ वी आर हेडिंग टू आवर डेस्टिनेशन एंड दैट्स माई बेबी. बहुत नींद आ रही है. क्या करते हैं हम लोग, आंखें धोते और निकल जाते हैं, आंखें धोते निकल जाते हैं. इनको नींद आ रही है. हु स्लेप्ट वेरी नाइसली. मेरा क्या, नॉट वेरी नाइसली, नॉट वेरी ओनली 4 hours. 0 and 4, compare it. Ugh. So okay, now let's go without further ado and no more big halt. So फटाफट जाते हैं. So ये बच्चा पार्टी हमें मिल गए छोटे से ब्रेक में. बाय. And now we are heading towards our destination. क्या cute दिखते हैं ना. Like I just enjoy the small moments with strangers जो I don't think मुझे वापस मिलेंगे भी कि नहीं, but the happiness they give in such little time is just on another level. Like एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है. और हम लोग ये बंजर से जंगल में आ गए जिसके ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, बस सामने की ओर रास्ता है एकदम स्मूथ सा जो सिर्फ लेके जा रहा है हमारी मंजिल की ओर. एंड हम लोग बोटात पहुंच गए. ये
So we are just 10 minutes away from the temple. By the way, हम लोग बोटाद आए हैं to Sarangpur's temple, Hanuman ji का temple है, and we were just very hungry because we did not eat anything than chips. So we are having pani puri. By the way, Mumbai people or pani puri lover will find pani puris anywhere, anytime. So that's what we got. गोलगप्पे ठूसने के बाद ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज सनसेट मिला है एंड हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स राइट एंड फाइनली डेस्टिनेशन पे आ गए हैं एंड दिस इज सारंगपुर मंदिर इन बोटाद. सो बोलो पवन सुत हनुमान की जय. सो मी एंड बुआ वी आर हियर. वी गॉट फ्रेशन अप अपने रूम में. बाय द वे रूम टूर देखना बाकी है एंड शूट करना भी बाकी है. तो पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं देन बाकी का काम. सो लेट्स गो. By the way, this was the rush at 5 a.m. in the morning for Aarti and we were not expecting कि इतना rush होगा, but it was a Saturday and a full moon, so it was supposed to be this rushed. And this is the inside view of the temple. And this is Hari Mandir right next to the Sarangpur Hanuman temple, and inside there is a bullock cart and a bathing spot which was used by Swaminarayan ji. And this is the view of Swaminarayan Bhagwan. After taking the darshan, this was our morning prasad, and this is the beautiful campus of the सारंगपुर टेम्पल एंड द वाइट वाला है ना वही हमारा स्टे एरिया है. एंड दिस इज गॉर्जियस टेम्पल ऑफ हनुमान जी एंड दिस इज अनदर टेम्पल ऑफ नीलकंठ महादेव. सो हम लोग मंदिर में आ गए थे एंड वी टुक द रूम. दिस इज अ रूम टूर व्हेन वी आर लिविंग. PS द रूम इज मेसी एंड या हियर इट गोज. सो वी हैव ब्यूटिफुल बेड्स. 4 beds, so easily 4 people can. That's Bua. Then this is the washroom area. We have a washroom area. There's a water basin. Here's me. Hi. Sorry. Here's me. Hi. There's the area and there's the shower area. Wait. We also have a beautiful balcony. So let's go outside. Woohoo! And that's the parking view. Okay. हम लोग अभी रेडी हो गए और सारंगपुर के मंदिर से निकल के हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे. देखते हैं अभी सुबह के 10:15 बजे है. देखते हैं कितने बजे पहुंच जाएंगे करके. गुजराती लोग गुजरात में आके खमण टुकड़ा नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? तो वही खाएंगे हम लोग आज. हाँ इमर ले ले बस बेनो ले लो बोलो हरी ऑर्डर हाँ એટલું જ થયું છે. सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को मदद किया. इन्होंने सब लोगों ने
सो मेरा सीट अभी बैक से का टूट गया था एंड मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मेरे को हर चीज़ टाइम पे मिल जाता है। And ये वाले काका ने वेल्डिंग करके कर दिया है काम खत्म। काका हाय एंड थैंक यू सो मच। ये सब लोग थे यहाँ पे जिसने हेल्प की है और सब लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अरे सब चिल्लर पार्टी है। सो अभी इनको मिलने के लिए मेरे को और बड़ा वाला और अच्छा वाला बाइक लाना है। सो जल्दी जल्दी पैसे आओ और हम दूसरा नया बाइक लेके यहीं पे आएंगे और इन सब से मिलेंगे। सो वी आर अबाउट टू रीच बोरसद एंड हाइड्रेटिंग एंड energizing myself to keep going ahead. So we reached Surat and oh my god, hydration. So I just ordered myself a juice and we are planning to take a halt because Bua is tired. I am a little but she's more tired, so I can't see her in this halat. So maybe we'll stay, but let's see. जो भी plan होगा आपको बताएंगे. Hello, so we got a room to ourselves. By the way, we reached Kamraj and हम लोग ने ये होटल बस वो कामरेज टोल के यहाँ पे ही लिया. This is Hotel Pearl and yeah, she was too tired to ride, but now she has all the energy to watch my vlog. ऐसे कैसे चलेगा? अरे किंजल का व्लॉग एवरी सैटरडे को 7 बजे आता है, तो मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? Point. But कुछ तो गड़बड़ है दया. Like she wants to sleep, now she wants to watch vlogs. ऐसे कैसे? But no. Now the best part, we are ordering food and the menu looks tempting. I hope the food tastes tempting too. So let's see what we ordered. So we have hara bhara kebabs, roti, paneer butter masala and dum biryani. Good morning you guys. So we are leaving from Surat. It is almost 6 hours of riding but नहीं and ठंडी बहुत ज़्यादा है. So yeah, I worn a sweatshirt but she doesn't have anything. Oops. Now yeah, we are all set and see you in a while on the road. Good morning. I get the sugar, you don't. How lovely the sunrise is. मतलब मैं जितनी बार भी राइड पे सनराइज देखती हूँ ना, उसका फीलिंग कुछ और ही होता है. एंड दैट्स मी. से हाय मी. एंड खुला रास्ता सुबह सुबह का उफ मज़ा आता है, स्पेशली जब रास्ता स्मूथ होता है ना एंड लेस ट्रैफिक. दैट इज़ व्हेन यू एंजॉय योर राइड द मोस्ट. एंड या लेट्स गो होम. सो हम लोग अभी गंदे भी पहुँचे एंड चाय टाइम, द बेस्ट टाइम ऑफ द मॉर्निंग. एंड माई बुआ इज नॉट फीलिंग वेल, तो हम लोग ने ब्रेक ले लिया है. लेट हर फील लिटिल गुड. दिस टाइम शी इज़ अनवेल, शी इज़ puking and puking. So yeah, we'll take a quick break, चाय पियेंगे, फ्रेश होंगे and move ahead to Mumbai. Home is calling, home is calling. सोना है घर जाके, सोना है घर जाके. So we are at पासी डेयरी फार्म. बहुत ज़्यादा भूख लगा था and we were craving some delicious food and हम यहीं से जा रहे थे. So I thought why not stop here and have food. So we have ordered some delicious food. So here's what we ordered. How aesthetic they have made this Parsi dairy. Oh my god, I cannot get over it. It is beautiful and such rustic view and such calmness too. By the way, this is our food, paneer pakoras and sada dosa. Also, I got a malai milkshake which was not good, but food was amazing. Hello, so we are back from amazing ride. दो इस टाइम मुझे बहुत दिक्कत हुई. One, my back set broke. Two, Auntie fell ill, like she was just puking while we were coming back. But we also had a memorable ride and it was just fun. I hope आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, the destination and everything. अगर अच्छा लगा हो तो like, comment, share. You know the drill, right? अभी मिलते हैं next destination पे with next video and lots of fun. Till then, be safe and be kind. Bye.